It's in my live, live. Lucky, lucky. Are we connected, guys? Lucky, lucky, lucky. The present has no limit. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ah. We've come too far Ah, to give up. yeah. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all Lucky, night to the sun. We're God, up all night to what get the fuck, some. We're up son, all night for good rock the fun. We're up all sun, night to lucky, get lucky, lucky. We're up lucky. all night to get lucky. We're So, up all so, night so, to get why lucky. are, so why We're I up all am night to late get today? lucky. We're The up all reason night is to get lucky. as simple as that. I was watching Mirzapur season 3 and it's really, really, believe me, that's just really, really good. Mirzapur season 3, like, boom thing, okay? I just love that Mirzapur season 3 though. Lucky, lucky. So today we are learning about. So today we are one more time going to learn the double OOP, object oriented programming, because now also I have few doubts on that. What the fuck is happening with my camera though? Not done here. Come on. Okay. हाँ ये head बहुत ज़्यादा है. What the fuck man? Set our camera first. Okay. Now it's good. Now it's good. Let's settle this. So let's go to our home screen. Mathematical lucky. Lucky, lucky. Sleep chilled. If those songs are repeating, there is non-copyright music. I want a non-copyright music. Okay, wow, my fan is off. Or should we just go and turn on our fan? No, that is copyright music. Yeah.
Red current. हवा का तो नॉइज नहीं आ रहा होगा. So let's go. स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रीम. So let's go with this. So let's go out of Lilish. Hey, what's going on, everybody? It's Bro. Hope you're doing well. And in this video, I'm going to explain. Hey, what's going on, everybody? It's Bro. Hope you're doing well. And in this video, I'm going to explain object-oriented programming in Python. So sit back, relax, and enjoy the show. If I could have just a moment of your time, please like, comment, and subscribe. I would greatly appreciate it. Welcome to today's topic on Python object-oriented programming, also known as POOP, and in today's video we're going to be creating objects. An object is an instance of a class. By using programming, we can create representations of real-life objects. So look around you wherever you're sitting or standing right now. You are surrounded by objects. Next to me I have a phone, a television, some snacks, and I'm talking into a microphone. Point being, we can use programming to mimic real-world objects by assigning a Right. combination of attributes, what an object is or has, and methods, what an object can do. Now, in order to create an object, we'll need to create a class. A class can function as a blueprint that will describe what attributes and methods that our distinct type of object will have. You can either create your class within your main module, or you could create a separate file dedicated solely for your class. Now, to create a class, we would type class and then the name of the object that we would like to create. So today, I would like to create some car objects because I like cars. So we would type car, and a common naming convention with class names is that they should be capital. So car is going to have a capital C. And for the time being, we need to type in something. I'll just type in pass as a placeholder. So if you have, because I like cars. So we would type car, and a common naming convention with class names is that they should be capital. So car is going to have a capital C. And for the time being, we need to type in something. I'll just type in pass as a placeholder. So if you have a small program, it may be better to write your class within your main module, but if your class is fairly large, you may want to consider placing your class within a separate module. So if you were to take that route, we would go to File, New, Python file, and we would name this car, click Python file, and we would declare our class within the separate module. So class, on file, and in your class would be better to write. And for the time being, we need to type in something. I'll just type in pass as a placeholder. So if you have a small program, it may be better to write your class within your main module, but if your class is fairly large, you may want to consider placing your class within a separate module. So if you were to take that route, we would go to File, New, Python file, and we would name this car, click Python file, and we would declare our class within the separate module. So class, car, and for now, I'll type in pass. Then we just need to import this class. So within our main module, we would type from the name of the module, import the name of the class. From car, import car. Now, objects can have some combination of attributes and methods. Attributes describe what an object is or has. So what are a few attributes that cars might have? They might have a make, so let's create a few variables. For the time being, I'm just going to use none as a placeholder. Cars can have a model, a year, and a color. Now, objects can also have methods. What kinds of methods could cars perform? Perhaps a drive method and a stop method. So let's define those. DEF, let's say drive, and we'll have one argument, self. Self refers to the object that is using this method. Now, what do we want to do when we call this method? Let's say self refers to the stop method. So let's define. Now, from the name of the module, attributes describe what an object is or has. So what are a few attributes that cars might have? They might have a make, so let's create a few variables. For the time being, I'm just going to use none as a placeholder. Cars can have a model, a year, and a color. Now, objects can also have methods. What kinds of methods could cars perform? Perhaps a drive method and a stop method. So let's define those. DEF, let's say. Okay. None. Drive, and we'll have one argument, self. Self refers to the object that is using this method. Now, what do we want to do when we call this method? Let's say this car is driving. Let's create a stop method as well. DEF, stop, and we will print this car is stopped. We now have all of the different attributes and methods we would like our car objects. We should do it, in the def function. Okay.
stop self. Stop. To have, but there is one more thing that we need. It is a special method called the init method that will construct objects for us. In other programming languages, this is known as the constructor. So we need a special method that will create objects for us. So we need to define this method, def, and the syntax on this is somewhat strange. It is two underscores, init, it's short for initialize, two underscores again, and then we need at least on the constructor. So we need a special method that will create objects for us, objects we would like our car objects to have. But there is one more thing that we need. It is a special method called the init method that will construct objects for us. In other programming languages, this is known as the constructor. So we need a special method that will create objects for us. Why we're using a def instructor function? Let's search it first. Then we will apply on. Def it won't be automatically password. Let's search it. Why we use this def init function? Why we use this on Python? In Python, there is method is established method that is automatically called them all instructions object for a class and created. This method is controlled known as the initialization or contingents. Okay. There are breakdown of how it's used. Initialization of object attributes. The permutation measures in this method is okay. Get it. So we need to define this method, def, and the syntax on this is somewhat strange. It is two underscores, init, it's short for initialize, two underscores again, and then we need at least self as an argument. And then we can actually assign our car objects unique variables. So take all of these attributes that we have, and we're going to place them within this init method. Now we can receive arguments when we create car objects, but we need to pass them in as arguments to our init method. So we need to set up some parameters. Let's say in order to create a car object, we need a make, a model, a year, and color. Okay, let's add one by one. Make. Now here and color. Then when we receive these arguments, we can actually assign them to each car's specific attributes, but we need to precede each of these with self. Self is referring to the object that we're currently working on or creating. So self.make, self.model, self is arguments. We can actually assign them to each car's specific attributes, but we need to precede each of these with self. Self is referring to the object that we're currently working on or creating. So self.make, self.model, self.year, and self.color. And then when we assign these, we're going to say self.make equals whatever. Okay.
self-love. Model. Make that we receive when it's passed in as an argument. Self.model equals model, and continue that pattern for year and color. All right, that is all we need for our class car. We have a constructor. We're assigning arguments that we receive to the attributes of our car object, and we also have two methods, one for drive and one for stop. Now we can start creating some car objects. So going back to my main file here, to create an object, we need a unique name for it. Let's call this first car just car1 equals the name of the class, car, then a set of parentheses. Now, in order to construct a car object, we need to pass in a matching set of arguments. You can see here that we need to pass in a make, a model, a year, and a color. R1 will be equal to R bracket plus 3. Yeah. Error car into zone. What the fuck is this? Car into. Acha, okay. Let's enter in space. Whatever now. Now if it's showing you. Now it should work by yes. Sahil Sawal. By Kisfield Ki Tayari Kar Rhe Ho. Sahil Sawal. AI/MLDS. Yes, I'm learning Python. I'm learning Python for machine learning. So yeah, man. But I'm not getting it why this error code is showing, man. So that's why, like. Okay, let's add here F statement.
ER. Set. Sahil Sawal. Okay, I'm also learning Java full stack right now. Okay, that's good. I mean, by the way, what are you doing? I mean, you are doing like BCA, BTech, or something. What I mean? ER. Sahil Sawal. I want to play a big game on Netflix. As a SDE role. Okay, okay. You want to do a Netflix thing? That's a good thing. I mean, I'm not sure where I wanted to go. Why this error code is arriving? All the time we are at it. Hi everyone, so welcome. Now can search me in YouTube. Okay, type is add function is missing one required positional argument p. Okay, so why we are getting this error we'll see in this video. Here I have this function p and I'm calling add function by, and I'm also passing. You'll get type error, add is missing one required positional argument. Okay, why? Because we have two parameters, right? So we need to pass two value. Got it? But I'm passing all these values, but then also it's showing me like something is missing. Missing 4 requirement. These value are. So what kind of car should we make? Let's say that the make is going to be Chevy. We need a model, perhaps Corvette. Sahil Sawal. I did my BTech previous year. Actually, I'm changing my career path from Nana to it. Okay, you are changing your career now. You completed your BTech and okay. ER. Sahil Sawal. What about you, brother? I'm doing BCA on MET. I'm in my first sem. I recently started. So yeah, I'm learning Python for machine learning. So yeah, I mean, this is it. Some business stuff problem. A year. Let's get one by one. For let's take BMW. Model M3, M4, and year 2024. ER. Sahil Sawal. MIT. Manipal. MET, not MIT, it's MET. ER. Sahil Sawal. Great. I'm doing on MET Noida. Noida. What is Noida? MET Noida. The spring and yeah, ER. main Sahil object. Sawal. OKK. Yep. 2021 is good. And a color. Let's say blue. By the way, what do you pass out on? ER. Sahil Sawal. Rock right thumbs up sign. Now, let's Right. actually access some of these cars' attributes. And I should probably put this with the print statement. So print car one's Games make, and and this should
I think we have to make another file for this. So then I will add. Okay, let's make another folder, not folder, file, which is will be Python uyt dot ph. I think uyt dot ph. F and from ph or py. Yeah, py. Rename. ER. Sahil Sawal. What's your dream company? I don't know. Probably I also don't know. Like probably big tech company or something like those. Like Google will be good. Google, Microsoft, or Apple because of those packages, or you can say like environment. Oh, ah, ah, ER. Sahil Sawal. Fong. found. By the way, why do you choose Netflix? We have more options also. Stream, island module error. Ah, wow. Thoughtful. कार है बताया module. Car import car module node find okay module car and Print Chevy. Then we can do the same thing for model, year, and up make make because Netflix and chilled. It's a good point. ER. Sahil Sawal. Because. Netflix and chill. That's good. That's good. Netflix and chilled. Emerging tech module found error. No module name car is tweet well. Neat. Friend. Hey, we are BMW. Finally. Why it's not working here? and color. So let's change some of these around. Model, year, and color. Yep, this object is a Chevy Corvette 2021, and the color is blue. And we should have two methods as well. So car 1, I would like this car to use its drive method. This car is driving, and let's have this car use its stop method. Car 1 dot stop. This car is Sprint all. Equals. And color.
Hey, why? BMW M4 2024 black color. ER. Yeah. Sahil Sawal. Chalo mi hindi mi batata hu. Main boat research key thi web development erndpe to Netflix us work car rehi that's why. Web 4.0 is all about intelligent web. Okay. मैं बोलता हूँ this word web ER&D पे तो Netflix उस पे वर्क करता होगा. Why web 4.0 is all about intelligence. Yeah, that's good. I mean, that's good. I mean. This car is driving. This car is driving. This car is stopped. Sahil Web Sawal. 2.0 Web 3.0 itna Kaliga NHI Jitni Web 4.0 Kaliga. चलेगा. Okay, web 3.1 चलेगा नहीं जितना में web 3.4. Okay, ये different होता है क्या? I mean, these are different things. Web 3.0 and web 3.4. I don't know about web dev though. I mean, I made a web page, but yeah. ER. Sahil Sawal. Web 3.0 ka market band hone bala high. Funding pickle do solo se rukahui I high boat companies key. Okay. I really told, I mean, I don't know about those things. Web 3.0 and all those. Sahil Sawal. To growth itni high nahi usm. Job utni high jitni peli thi. My most of the friends now are doing front-end developer or back-end developer or doing web dev. These are the three things or like my most of the friends are doing. There's one thing that I should mention real quick because I forgot to mention it earlier. So within our init method, you can see that we need 5 arguments in order to construct a car object: self, make, model, year, and color. But when we pass in our arguments, we're not passing in anything for self. We only have 4 arguments here. That's because with Python, we do not need to pass in self. That's done automatically for us. We're referring to the object that we're dealing with. As you can see with our derive and stop method, we need to pass in self in order to execute our method. But when we call this method, we do not need to do so. So just remember. कुछ सीखना भाई. Yes, I'm learning with this. Python, with self, we do not need to pass in anything for this argument. That is all. Now, the nice thing about this is that we can reuse this class as a blueprint to create more car objects. We just call that init method that constructor. So this time, let's create a second car called car2. And this will be a different kind of car. What kinds of arguments do we pass in? Let's say this is a Ford Mustang. The year will be 2022, and the color will be red. Will be equal to which is really Ford. Mustang. Twenty 24. No, one, 24, and it will be. It's also black color. I say kuch cka hamko pi.
कुछ सिखाओ कुंदू भाई. What? What I'm going to do? I'm learning, by the way. I'm not a teacher or something, so I can teach you. तो सिखाओ. You are saying, yeah. Actually, web dev का crazy Sahil इतना Sawal. Actually web development ka craze itna ilai hai kyunki. Web pura free hai. Haha bait care apps ki to peli Apple Store pe kuch percent charges karta tha abvo Google Play Store vale b karte hai. Yup, that's true though. Web dev has some crazy audience, I think. Crazy audience review. Web dev have some craziness though. Alright, let's check cart's use attributes. And let's have car2 use its Er. Sahil Sawal. To company valo ko itna profit nahi ho rha. To yida tar transition / purchased web pejaa rehigis or boom ho rha high web. Okay. Those things are, I don't know about that. I heard from you. That's a good thing. Er. Sahil Sawal. Bakey Web is the first place for every consumer or buyer. SAB Udr High Chal RHA High starting SE. Okay, Wiki Web is the first place to every customer. Wiki Web. YML new news आया है. Oh man. Er. Sahil Sawal. AI/ML new news ayi high. Or maths ka kof boat logo ko high. Er. Sahil Sawal. Hope you get a point. Yes, I know math are there, like so many math things. I take 2 or 3 days to understand loops in Python. I mean, that's difficult. And now this is day number 2 of learning classes. I mean, class functions or method in Python. I mean, it's difficult. It's used so many math things. First of all, BMW, this. And then we ended with Mustang. Ford Mustang. It's capital. C plus F. What are you doing, bro? I'm doing Python. I'm learning Python. This is day number 16, I think. This is day number 16. We're learning OOP, Object Oriented Programming. My bro code. drive and stop method. This is a Ford Mustang. The year is 2022. The color is red. This car. Hope you are getting the point. भाई इसमें crazy चलिए करता जाओ. Car is driving and this car stopped. One other thing that we can do too is that within our method. Games development की मैथ ही 3D गेम में थोड़ा मैथ एडवांस है. Yes, 3D games use like C and C++, little bit of Python also. And why it's not working? Just give me a sec. Just give me a sec. Er. Sahil Sawal. C# also. Yes, that's use. Here. Er. Let's replace car with the name of the Sahil model that. Sawal.
Unity or Unreal Engine Kli. Yes, yes. Working Those with. are like those are making for games, but in terms of code, they use C and C++ for game dev. So this too. This is a Ford Mustang. The year is 2022. The color is red. This car is driving, and this car is stopped. One other thing that we can do too is that within our methods here, let's replace car with the name of the model that we're working with. So this plus self dot model plus is driving. Now this self keyword. Okay, let's add that. Self dot using double quote plus self model. Sage Vince. What's up, bro? WYD. What's up? What's up? Ooh, how long is Oh my god. This is big. This is a big code. Let's comment out this string function. String. The error code is coming. What is now error code? Invalid signing spells forget a comma. Okay, forget comma. Where? In here, use a ER. comma. Sahil Sawal. ML ka kud se karn ka sak rhe ho aap yak hoi course karn k sak rhe ho. ML का कुछ से करने से कुछ यहाँ है आप यही कोई कोर्स करने का सोच रहे हो no, right now I'm not. First of all, I'm going to learn this Python. Then I will decide which course should I take. In our college, there is a specialization course about data field. I mean, I think not about machine learning, but something about data field is there. So I'm thinking to take that course. Okay, syntax invariant. Oh. Think of it as you're replacing self with the name of the object that we're working on. If car1 is using its drive method, replace the self with car1. If this is car2 that called this method, then replace the self with car2. Think of it that way. And let's do the same thing for stop. This plus self dot model plus is stopped. All right. Okay, we have to add two pluses. First in front and then and in the back. Now print. Yep. This Mustang is driving. This Mustang is driving. Let's another here also. Plus and plus in mid self model. What happened now, bhai? ER. Sahil Sawal. Vice DSA Yerurina Hi Na. Isma. Don't know that. I think I have to learn Java for that.
Okay. What happened? My क्या समझ नहीं. Yes. Self.mod. Okay. ER. Sahil Sawal. OKK. Should I add a like double code in here? Yeah, by the way, DSC is important for Aniket the big Biowahar. companies. Hi. Hi, Aniket. Hi, Aniket. Should I use double code in here? I'm feeling I should use double code. Let's use double code. Okay. Aniket Then also it's not Biowahar. working. Hi, will you take my name? Huh? Hi. Will you take my name? Aniket? Self. What is wrong? I mean, print self.mod in here also. I did the same thing, but Aniket Biowahar. How are you? I'm good. What about you? I use double quotes also, and also not working. Let's first run this code. Self. Oh, wrong spelling, yaar. SELF. Now it's good. Run the code, and yes, Aniket writing Probably must don't need tank. these anymore. So Learning Python. Yes. Are you also learning let's have Python? car1 use its drive and stop ER. method. This Corvette is Sahil driving, this Sawal. Corvette is stopped. Bye. You are Aniket going ER. Biowahar. Fine brew. You are going. Didiya Okay. Jawanjal. Why? Consier miho. First year में हो. I mean first year, first semester. I mean BCA first Aniket semester. Biowahar. Good What you night, are by the way. making? Yeah, I'm not making anything. I'm just like learning. I'm learning double OOP, object oriented Let's programming. try this with car2. This Mustang is driving, this Mustang is stopped. Now you can have them do things independently too. Let's have car1 use its drive method and car2 use its stop method. This Corvette is driving and this Mustang is stopped. Aniket In conclusion, Biowahar. a Yes. class can function as a Yes. blueprint to create objects. We can assign attributes, what describe an object is or has, and methods, what each object can do. And then within our class, we have a special method called the init method. We can pass in some arguments and assign these arguments to each object's attributes, method called the init or has, and methods, what each object can do. And then within our class, we have a special method called the init method. We can pass in some arguments and assign these arguments to each object's attributes. And then we can reuse this class as if it was a blueprint, so we can create more objects out of it. So Okay. that is the basics of object-oriented programming in Python. If you would like a copy of all this code, I will post this in the comment section down below. But yeah, that's the basics of object-oriented programming in Python. Hey you, yeah, I'm talking to you. If you learned something new, then help me help you in 3 easy steps. By smashing Yes, do like, by the way. Like, comment, share, subscribe, all things are do. By the way, I'm learning from Bro Code. This is a good YouTube channel for learning Aniket Python. Biowahar. Why are you streaming? Because Yeah, I'm with- doing open learning and I want something that I will do every day for like consistency for my coding journey. What's going on, everybody? It's Mainly for open learning. I'm building connection. Bro. Hope So you're doing yeah, well. man. And in this video, I'm going to explain the basics of class variables in Python. So sit back, relax. Hope you're doing well. And in this video, I'm going to explain the Aniket basics of class Biowahar. You are from? variables I'm in from Python. Odisha. So sit back, relax, Odisha, India, and enjoy Odisha. the show. If you wouldn't mind, please like, comment, and subscribe. 1 like equals 1 prayer for the YouTube algorithm. Here's a super quick video on the differences between class and instance variables. For this example, let's say we have 2 car objects named car1 and car2, and I'm just passing in a bunch of values to each of these car. Aniket Biowahar.
Yes, good. Yes, good. Ade, what are you doing? I mean, you completed your graduation, completed your masters, or something like. Let's make another function of it. Anaket Vaiwahar. Bye. We're going. Bye bye. Have a good night, by the way. By the way, like, comment, share. If you want to subscribe also. If you can, I mean. So we are taking two values, Our constructors. car1 Now, within and my this, class car, car1 to I this. have my init method, also known as the constructor. And what I'm doing is assigning all of these values to the variables found within my car constructor. These variables, declared inside of the constructor, are known as instanced variables, and each object can have their own unique values Anaket assigned to each of these Vaiwahar. variables. Now, where Yes. I completed my engineering in CSE. CSE. What is the full form of CSE? I don't know. Sorry. CSE. a class variable is different is that a class variable is declared inside the class but outside of the constructor. And what we can do is set some default values for some variables. Let's say we would like to add an additional variable. Let's say wheels. Wheels equals, and Wheels. we can set a default value for all instances of this class for each car object that we create. So we set wheels to equal 4. This is an example of a class variable. Whenever we create a car object, we can pass in a unique make, model, year, and color. And I But can't by buy default, Lahar. they will all have 4 wheels. Now I am doing job Infosys. Infosys. Oh, that's good, man. If you can, then just recommend me also. If you can, though. Now, if I was to print And the I amount of can't buy wheels that Lahar. car Computer Science and Engineering. Okay. So, you are in web dev or in data thing or developing thing or app developing or something like that. car 1 and car 2 have, they will both have 4 wheels. It's as if we're setting a default value. If I change this to 2 wheels, Okay. Set a default value, which is wheel. WHLS wheels. It will be 4. Anaket Vaiwahar. Yes, sure. Yes, sir. Thank you. Thank you, though. well then these cars have 2 wheels. Maybe they're motorcycles or something. Now you can actually change these values. Each object will have their own copy of this variable, but you can set it to a default value. So let's say car 1 is a motorcycle. Car 1.wheels equals 2. So if I were to print car 1's wheels along with car 2, car 1 will have 2 wheels. Okay, we can change that Anaket also. Vaiwahar. As a mean as well as MERN developer. As a aiming as well, main developer. Okay, like full stack developer. Okay, marine developer. Okay. Marine developer. Let's print here. Anaket Vaiwahar. Yes. Okay, that's good. Mavnik. By Opco Linux Samyata Hikia. Hi, आपका Linux है क्या? Linux. I'm using Windows. I don't use Anaket Linux. Vaiwahar. Ha. Kojik 9. Which concept do you learning now? I'm learning object-oriented programming in Python. But car 2, Mainly class function and all those things. I mean, class mode or
class method, I think, or something. is still using that default amount of wheels, which is 4. Now there's Class favorite 4. Let's Anaket change it. Viwahar. Do you have K? Do you have Anaket Viwahar. Any. yeah, I mean did network make difference, and how did you get job in Infosys? Infosys or something like else? Plus CAR car 2 will be car 2 dot wheels will be equal to 10 wheels. 12 wheels. 12 wheels and print car 2 dot wheels. Anaket Viwahar. By campus selection. Okay, by campus selection. That's mean definitely I'm also going to get a job. Definitely, but I will not prefer to depend upon our college faculty and all those things. Because I want to do with my own. I don't want to depend upon like my college and nothing. another way in which That's why next year I'm going to Bhubaneswar, which is the capital of Odisha, and I'm going to do some internship there. So yeah, man. you can access a class variable. You don't necessarily need to create an object to do so. You can just use the name of the class. So what I'm going to do is turn all of these lines into comments, and I will print the amount of wheels that our class has. So type in the name of the class, car with a capital C. It should be the same name as your class name, followed by the name of the class variable, car.wheels. With a capital C, it should be the same name as your class name. Okay, class name is car. Anaket Viwahar. Yes, you can. Followed by the name of the class Yes, I variable, will do. car.wheels. But make sure you spell it right. Alright, so this will display for wheels. Now, what if we decide to change the class variable through our class? Well, that will affect all instances of our class. So let's say car.wheels equals 2. It's as if we change our mind and we have decided to create motorcycles instead of cars. Well, if we were to change the wheels class variable through the use of our car class, well then it's going to affect it for all instances of this class. You can see that both car1 and car2 now have 2 wheels. When we just changed car1's wheels, it did not affect car2 at all. So that's the main difference between a class variable and an instance variable. An instance wheels Okay, did wait, not wait. affect the class. You can see that both car1 and car2 now have 2 wheels. When we just changed car1's wheels, it did not affect car2 at all. So that's the main difference between a class variable and an instance variable. An instance variable is declared inside of a constructor, and they can be given unique values. With class variables, they are declared within a class, but outside of the constructor, and you can set a default value for all instances of this class, for all unique objects Okay. that are created, and then you can change those values later too. So if you would like a copy of all this code, I will post all of this in the comment section down below. But yeah, that is the basics of class variables. Should I stop with the like basic thing or go like advanced? I will not understand though advanced level code and Python there are multiple. Should I do Python method changing? I don't think so. Why? Okay, let's continue our that playlist with where Hey, apna what's going on everybody? college. It's Bro, hope you're doing well, and in this video I'm going to explain object-oriented programming in Python. Let's go playlist learning. A really neat feature. So one thing that we can do that's available to us with Python is that we can display a string multiple times. Here we are. कर सकते हैं तो We उसको just have करने का तरीका two basically होगा videos, I think. We just have 2 videos. We have to learn print like attributes and methods. These are the 2 things. After that, we complete. organize our code in a well
स्ट्रक्चर्ड मैनर। Well तो ये सारी क्लासेस completed. एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक चीजें थी जिनको हमने इस पार्ट 1 के अंदर कवर किया है। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनफैक्ट कैसे हम प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्राइवेट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कैसे करते हैं किसी एट्रीब्यूट को। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 के अंदर। तो ऊप्स चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड का काम होता है टू डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज या द एंटायर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं कोड के अंदर तो वो क्या करती है, वो मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, Del. क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मेथड्स होते हैं, उसके काफी सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारी मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। तो कई बार हो सकता है ऐसे हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी जिसको बाद में हमें कभी यूज नहीं करना, तो हम इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिलीट कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें सिंपली DAL ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को डिलीट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को, एंड इस तरीके से स्टूडेंट्स already learned this. हमारे लिए जो ऑलरेडी प्रिंट होता है वो चीज प्रिंट हो जाती है। कोशिश करते हैं सस्पेंसेस होती है उन एट्रीब्यूट को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी तक अगर मैंने एक स्टूडेंट बनाया है तो स्टूडेंट में मैं लिख सकती हूँ s1.name। मैं क्या कर रही हूँ, अपनी क्लास के स्कोप से, यानी ये क्लास का स्कोप है जहाँ जहाँ क्लास के अंदर वाली चीजें हैं, क्लास के बाहर मैं स्टूडेंट के नेम को एक्सेस कर सकती हूँ। तो इसे हम जनरली पब्लिक की कैटेगरी में डालते हैं। पर कई बार हमारी कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसे सेंसिटिव एट्रीब्यूट होता है, कुछ ऐसा मेथड होता है जिसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिसको हम अपनी क्लास से बाहर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्रिएट अ क्लास कॉल्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट के लिए कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं और इस अकाउंट के लिए हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ इनिट में हमारे पास सेल्फ है, वी हैव द अकाउंट नंबर, उसके साथ हमारे पास अकाउंट का पासवर्ड भी। तो अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर एंड सेल्फ डॉट अकाउंट पासवर्ड इज इक्वल टू अकाउंट पासवर्ड। इस तरीके से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। अब लेट्स सपोज कल को कोई नया यूजर आता है और वो अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो अकाउंट के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज शुरुआत में जब किसी यूजर का अकाउंट क्रिएट होता है तो उसके लिए अकाउंट नंबर जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड उनका पासवर्ड जा रहा है ABCDE। इस तरीके से ये अकाउंट नंबर हो गया एंड ये पासवर्ड हो गया। अब कोई भी चाहे कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अकाउंट 1 डॉट अकाउंट नंबर को। अब वैसे तो यहाँ पर कोड में चीजें विजिबल है, बट जनरली फ्लो कैसे काम करता है, जनरली अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से कोई यूजर है वो अपना अकाउंट नंबर या फिर अपना पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे, उसको एंटर करेंगे एंड उसके बाद बैकएंड के अंदर हो सकता है पाइथन कोड के थ्रू भी हम इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसको डायरेक्टली यहाँ पर क्लास के अंदर सेव करवा रहे हैं। अब जब हम प्रिंट करवा रहे हैं अकाउंट नंबर, तो क्या होगा, हमारे लिए अकाउंट नंबर भी प्रिंट हो जाएगा और हमारे लिए यहाँ पे अकाउंट। Hi, JMJ. String and automation modules are learning this one. Joel Mark JMJ. आज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट WT are you studying? What are you studying? I'm learning Python. चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट I just right now completed the OOPS object oriented programming. वाले हैं। दिस इज द डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड कोई अपना Del स्टूडेंट keys. 1 I already read this Del key. चेंजेस होने के प्राइवेट होगा, ठीक है, बाहर सिक्योरिटी से बाहर नहीं पास करना चाहते तो उसे हम एक तरीके से प्राइवेट Attributes. Oops, part 2. There's so many बना सकते things हैं, in यानी हम उस OOPS. इन्फॉर्मेशन को क्लास के बाहर एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। और किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उसके आगे दो अंडरस्कोर लगा देते हैं। हमने क्या किया, ये दो अंडरस्कोर लगा दिए एंड ये चीज अब प्राइवेट हो गई। तो यहाँ पर इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस थिंग, यानी अकाउंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अकाउंट पासवर्ड को जब हम अब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और इसे रन करेंगे तो इस केस में अब हमारे पास एरर आ जाएगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अकाउंट पासवर्ड। तो बेसिकली ये चीज अब प्राइवेट हो गई, इसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कोई हमारे पास एक फंक्शन है रीसेट पासवर्ड का, ये सारी इमेजिनरी चीजें चल रही हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है जो रीसेट कर देता है पासवर्ड को एंड उस फंक्शन के अंदर हम लेट्स सपोज प्रिंट करवाना चाहते हैं अकाउंट 1 डॉट पासवर्ड या दिस विल बी सेल्फ डॉट अकाउंट पासवर्ड। तो ये चीज करवाना बिल्कुल पॉसिबल है, यानी यहाँ पे तो सेल्फ डॉट पासवर्ड चल जाएगा पर यहाँ पे अकाउंट। Which year are you studying? I'm doing BCA on first sem. In first sem. On MIT. डॉट पासवर्ड नहीं जाएगा क्योंकि ये फंक्शन कहाँ पे, ये फंक्शन क्लास के अंदर है और ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्लास के बाहर है। तो क्लास के बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पर क्लास के अंदर लाइक इफ आई ट्राई टू कॉल रीसेट पासवर्ड तो इस बार हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, इस बार सिंपली हमारा पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ क्लास के अंदर रखना चाहते हैं तो उसे प्राइवेट बना सकते हैं। अब ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक का कांसेप्ट है, ये जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर वर्क करता है, जावा होगी, C++ होगी, अगर आपको लैंग्वेजेस के अंदर बैकग्राउंड है तो एक्जैक्टली वैसे वर्क नहीं करता ऊप्स पाइथन के अंदर। बेसिकली पाइथन के अंदर कंसेप्चुअली हम पब्लिक एंड प्राइवेट को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी हमारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को हम प्राइवेट तो बना सकते हैं पर वो प्राइवेट जैसे होंगे, एक्जैक्टली प्राइवेट नहीं होंगे। पर इसके हम इतने ज्यादा इंप्लीमेंटेशन डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर कोई कभी पूछता है कि प्राइवेट में किस तरीके से हम चीजों को हाइड कर सकते हैं तो उसको हाइड करने का तरीका बेसिकली होगा कि एट्रीब्यूट्स के सामने भी हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दें, मेथड्स के सामने भी हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दें। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अनदर क्लास, एक नॉर्मल सी हम क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ क्लास कॉल्ड पर्सन। पर्सन क्लास के अंदर हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं नेम, जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं एनोनिमस। इस तरीके से हमने क्लास बना दी। अब p1 इज इक्वल टू दिस न्यू पर्सन जो हमारे लिए क्रिएट हुआ है। अगर हम यहाँ पर p1 डॉट नेम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो अब हमारे पास एरर आएगा। वी नो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल अंडरस्कोर को यूज किया। इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये चीज क्या होगी, Okay. Let's make a class. Class. Shantanu Saraf. Person. Yolusap Brew. Joel Mark Yeah, what's up, JMJ. Santanu? Okay, good work, all the best. Thank you, bro. How are you, Santanu? Hmm.
TG top 10 to 20. You are doing C++ oops bro? No, I'm not doing C++. I'm doing Python. Oops. MOUS. Enormous. You see the enormous. What happened to my song? If you buy wide. ये चीज़ एक तरीके Shantanu से conceptually Saraf. private हो गई ऐसे ही हम method I'm good bro. Nice to see you code my G. Thank you, thank you. Wow, wow. No thanks. हाँ, it's alright too. I use ad blockers for this, and now it's showing me this. This photo. methods को भी private बना सकते हैं for example if I define a method called hello जो क्या print करता है hello user इस तरीके से कुछ print करता है या hello I think they report me or not. Yeah, you see, allow ad blockers to report this ad. Now we go. TG top 10 to 20. It's too much good programming language कुछ thumbs इस up तरीके से print silent row. तो अब एक normal method की तरह इसे It's यहाँ पर too call much करना good possible नहीं है मतलब अगर हम programming सोचेंगे यहाँ पे language. इस तरीके से hello लिख देंगे तो ये चीज़ Thank Python के अंदर you. possible नहीं है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर भी हमारे पास error आ जाएगा कि person object has Okay, let's add a def function for the hide the name. Def and double snap. Hello. No. Print. Hello person. Showing error. No. no attribute possible नहीं है तरीके से text को भी private क्योंकि यहाँ पे हमने double underscore को use किया है इसे run Shantanu Saraf. W background wall. Thank you. Those are animes and these are games and those are animes posters. By the way, did someone watch One Piece or anyone watch? Animes or something like that. Did you watch animes, Santoro? Bring file error. Personal is not defined. Yeah. You want not name. Type error. Personal object has been attributed tab name. तो यहाँ पे हमारे पास error आ जाएगा तो ये चीज़ क्या होगी ये चीज़ एक तरीके से conceptually private होगी ऐसे ही हम methods को भी private बना सकते हैं for example if I define a method called hello जो क्या print करता है hello user इस तरीके से कुछ print करता है या hello person कुछ इस तरीके से print करता है तो अब एक normal method की तरह इसे यहाँ पर call करना possible नहीं मतलब अगर हम सोचें कि हम यहाँ पर इस तरीके से hello लिख देंगे तो ये चीज़ Python के अंदर possible नहीं है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर भी हमारे पास error आ जाएगा कि person object has no attribute Personal and no attribute. Yes. And the sprint. Hello, world. Shantanu Saraf. No bro but I wanna start, didn't getting time to watch, I've heard One Piece, Naruto, A are great. AOT are great. If you want to start anime now, start with what is that anime name? Death Note, the legendary Death Note, or AOT, Attack on Titan.
Or no. If you don't want to watch like those two also, I will must recommend my first ever anime was One Punch Man, and that was crazy, man. That is crazy. Season 3 will be come in this year, I think. Will be come. called है क्योंकि यहाँ पर हमने अंडरस्कोर को यूज कर लिया अब यहाँ पे एज अ बिगिनर हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि हमने फिर ऐसा फंक्शन क्यों बनाया है जिसे हम ऑब्जेक्ट के साथ कभी यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जनरली जिनको इंटरनली कोई दूसरा ही फंक्शन यूज करना चाहता है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वेलकम नाम का एक और फंक्शन बनाते हैं एंड दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल फंक्शन ये नॉर्मल हमारा मेथड है और ये क्या करता है ये पहले हेलो को प्रिंट करवाएगा कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद या हेलो के अंदर ये क्या पास करता है ये अपना नेम पास करता है दिस इज गोइंग टू बी सेल्फ डॉट नेम इनफैक्ट यहाँ पर भी हम सेल्फ कर देते हैं एंड फिर हमारा नेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो ये हेलो फंक्शन को कॉल लगाएगा और उसके अंदर सेल्फ का यानी अपना नेम पास करेगा जैसे अंडरस्कोर कह देते हैं और ये वेलकम फंक्शन क्या कर रहा है ये वेलकम फंक्शन हेलो को कॉल कर रहा है तो ये चाहे तो कंप्लीटली हेलो को कॉल कर सकता है यहाँ पर भी सेल्फ लिख देते हैं अब पर्सन को हम कह रहे हैं कि पर्सन वेलकम कर सकता है पर कभी हेलो नहीं बोल सकता वेलकम लेकिन हेलो को बोल सकता है क्योंकि वो इंटरनली क्लास का मेथड है तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है तो P1 अब क्या करेगा P1 अब वेलकम को कॉल करेगा क्योंकि ये चीज करना पॉसिबल है और वेलकम उसके लिए सेल्फ डॉट हेलो को कॉल करेगा इस कॉल के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा लेट्स सेव इट एंड रन इट क्या प्रिंट हो गया हमारे पास हेलो पर्सन और हमारे पास कोई एरर नहीं तो कैसे वर्क कर रही है चीजें ऐसे वर्क कर रही है कि अगर किसी चीज को हमने डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट बना दिया तो सिर्फ क्लास के जो इंटरनल फंक्शन है वही एक्सेस कर पाएंगे बाहर कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा दिस इज बेसिकली डन टू प्रिवेंट एक्सपोजिंग आवर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स आउटसाइड ऑफ द क्लास तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर मेंट टू बी यूज्ड ओनली विदिन द क्लास एंड नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास Shantanu Saraf. काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है दिस इज कॉल्ड All right, Brew, thank you for suggesting 100 double underlined. 100 double underline. Okay, this is sim. That okay. जो हमने ऑलरेडी बात की थी हमारी जो oops होते हैं oops के चार मेन पिलर्स होते हैं जिनमें से दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन तीसरा पिलर हम पढ़ने वाले हैं व्हिच इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट Inheritance. What is inheritance? Okay, I have a definition. I think inheritance. One parent, one child class inherits the data and memory of a parent class. That is what called inheritance. I think I read in class 12, class 11, class 12. There was a chapter called I think Introduction to Information Technology or something like that. There is a topic inheritance. Inheritance is where child class gain all the classes of something like that kind of. इजी टॉपिक है I don't know. जैसे रियल लाइफ के अंदर हम कई सारी चीजें इनहेरिट करते हैं And one class child was like drive the parent or method of another class which is parent. I was right. फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने अच्छे वैल्यूज हमारे ऊपर पास ऑन करते हैं तो हमने क्या किया एक तरीके से उनके जो गुड वैल्यूज हैं वो इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स ने अपने जो वैल्यूज हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट किए होंगे तो इस तरीके से पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ चीजें क्या होती है इनहेरिट होती है तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का जब एक जनरेशन ऑफ क्लास से दूसरी जनरेशन ऑफ क्लास में हम कुछ चीज पास करें उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर अब इसका क्या मतलब होता है इसका ये मतलब होता है कि व्हेन वन क्लास डिराइव्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास फॉर एग्जांपल जो कार है उसके अंदर एक स्टार्ट कार कैसे स्टार्ट होती है उसका एक अलग मेथड होगा कार कैसे स्टॉप होती है उसका एक अलग मेथड होगा और इस कार के अंदर एक कलर प्रॉपर्टी हो सकती है तो कार के अंदर ऑलरेडी कार को स्टार्ट और स्टॉप करने का लॉजिक लिखा हुआ है अब कल को टोयोटा डिसाइड करता है दैट दे वांट टू क्रिएट देयर ओन कार फैक्ट्री तो क्या कर सकते हैं टोयोटा कार अब टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां चाहे फॉर्च्यूनर होगी चाहे प्रियस होगी उनको भी तो स्टार्ट और स्टॉप करना है स्टार्ट और स्टॉप तो हर कार को करना है क्योंकि कार के अंदर एक सब कैटेगरी है टोयोटा का मतलब सारी कार्स में से ही कुछ तो टोयोटा की कार होगी ना तो जब कार के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं स्टार्ट और स्टॉप का लॉजिक कार के अंदर जब लिखा जा चुका है तो उसे सेकंड टाइम टोयोटा कार के अंदर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कोड के अंदर हम क्या करेंगे उस लॉजिक को इनहेरिट करेंगे उस लॉजिक को डिराइव करेंगे ले लेंगे कार वाली क्लास से और कैसे ले लेंगे जब हम टोयोटा कार क्लास को लिखेंगे तो उसके अंदर सिंपली क्लास नेम के साथ पैरेंथेसिस लगाएंगे और अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे तो पेरेंट क्लास या बेस क्लास वो क्लास होती है जिससे प्रॉपर्टीज ली जाती है और चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास वो होती है जो प्रॉपर्टीज लेती है यहाँ पे प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है प्रॉपर्टीज का मतलब है एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड भी हम इनहेरिट कर सकते हैं तो इसका एग्जांपल देखते हैं कोड के अंदर फॉर एग्जांपल वी क्रिएटेड दिस क्लास कॉल्ड कार अब कार के अंदर देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लेट्स सपोज कार के अंदर एक हमारे पास स्टैटिक मेथड है स्टार्ट यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं कार स्टार्टेड ये मेथड क्या है कार फॉर एग्जांपल लेती है यहाँ पे प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है प्रॉपर्टीज का मतलब है एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड भी हम इनहेरिट कर सकते हैं तो इसका एग्जांपल देखते हैं कोड के अंदर फॉर एग्जांपल वी क्रिएटेड दिस क्लास कॉल्ड कार अब कार के अंदर देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लेट्स सपोज कार के अंदर एक हमारे पास स्टैटिक मेथड है Static method. Then code method. स्टार्ट यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं कार स्टार्टेड ये मेथड क्या करेगा कार को स्टार्ट करेगा और एक और स्टैटिक मेथड हमारे पास है हम चाहे कोई तो स्टैटिक भी रख सकते हैं बाकी इनके अंदर एज कार ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रही इसलिए मैंने मेथड्स को स्टैटिक किया वी कैन कॉल इट स्टॉप स्टॉप मेथड क्या करेगा Stop. कार को स्टॉप करेगा कार स्टॉप इसे फिक्स कर लेते हैं तो ये हो गई हमारी कार क्लास जिसके अंदर हमारे पास दो सिंपल मेथड्स हैं Okay, let's add def.
Not really. Car started. Okay, another def function. Now, it's maximum. There a def function. Stop. कार स्टॉप अब हम एक और क्लास बनाने वाले हैं जिसे हम कहेंगे टोयोटा कार एंड टू शो इनहेरिटेंस हम यहां पे पेरेंथेसिस लगाने वाले हैं और उसके अंदर अपनी क्लास का नाम लिख देंगे जिसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को हम इनहेरिट करना चाहते हैं एंड फिर हम टोयोटा कार को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस कार के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड नेम, तो लेट्स क्रिएट आवर कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर वी गेट सेल्फ एंड वी गेट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड अब हम अपनी कार को क्रिएट करने वाले हैं। So my car 1 is equal to a Toyota car जिसके अंदर हम नेम let's suppose पास करने वाले हैं Fortuner and this is my car 2 जिसके अंदर it is also a Toyota car जिसके अंदर हम नेम पास करने वाले हैं Prius। अब let's suppose हम car 1 की बात करते हैं। What will I do? I'm going to print car 1 dot name और ये चीज बिल्कुल वर्क करेगी, इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारी इस क्लास के अंदर हमने car 1 को ऑलरेडी नाम दे दिया है, तो जब रन करके कोई एरर नहीं आएगा और हमारे लिए car 1 का नेम प्रिंट हो जाएगा। But if I try to do something like this, let's do first let's add a class that will BMW car BMW car and def int na okay, what happened? Support if none super in selection bar and self TG top 10 to 20. From how many years you are doing coding? I just recently started. This is day number 16. I'm doing coding. It's day number 16. Self, I mean, self.name. Name will be equal to name. That's the name. It's day number 16 though. TG top 10 to 20. Let's make a car 1. This will be equal to BMW car. car 1 डॉट स्टार्ट, तो इस केस में क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए?
इस केस में हो सकता है सबसे पहले चेक करें टोयोटा कार की एक ऑब्जेक्ट है। अब टोयोटा इफ आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस car1 डॉट स्टार्ट, तो इस केस में क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए? इस केस में हो सकता है सबसे पहले चेक करें टोयोटा कार की एक ऑब्जेक्ट है। अब टोयोटा कार के अंदर तो हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमारे पास एरर आएगा, बट क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज किया है तो इस कार के जितने भी मेथड्स थे, जितनी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। व्हेन वी रन इट तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कार स्टार्ट। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज एंड अपने मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं। Hello Gupta. Hey. इन डिफरेंट क्लासेस। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन करते, जैसे कलर को हम यहाँ पर पहले से स्पेसिफाई कर देते एज ब्लैक, तो हम उस चीज को यहाँ पर भी यूज कर पाते car1 डॉट कलर, एंड वो प्रॉपर्टी भी हमारी प्रिंट हो जाती है। अब इनहेरिटेंस को हम ब्लैक प्राप्त कर सकते हैं इन डिफरेंट क्लासेस। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन करते, जैसे कलर को हम यहाँ पर पहले से स्पेसिफाई कर देते एज ब्लैक, तो हम उस चीज को यहाँ पर भी यूज कर पाते car1 डॉट कलर। TG top 10 to 20. Python no need of semicolon face with stuck out tongue and winking eye. Hello Gupta. Hey bro kia pad raho. Siva sai dora babu pijagu. Can I join? एंड वो प्रॉपर्टी हमारे लिए प्रिंट हो जाती है। अब इनहेरिटेंस को हम तीन डिफरेंट टाइप्स के Hello Gupta. By data kun waste car roha high. Pad lena shanti se. Mic just off. Shut down. My mic suddenly shut down. कैटेगराइज करते हैं। These are the three different types of inheritance. सबसे पहली होती है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस, या इसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। इस इनहेरिटेंस टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास एक सिंगल पेरेंट क्लास होती है, या इसे बेस क्लास बोल सकते हैं। Single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance. And उससे I can do that though. Wait, let me on a painting. I can draw you how it's work. Small it. Single inheritance. So there is a parent class. Okay, there is a parent class. Name A. Okay, this bad. Okay, forget. This is a parent class. Name P. And the parent class is P. Okay, and there is another class which is a class which is a student class name B, which is a student class S. You control Z. Yeah, S, which is student class S. So in single inheritance, there is only one parent class and one child class. This parent class will be given. एक सिंगल डिराइव्ड क्लास निकलती है। सो दिस
इज माय बेस क्लास एंड दिस इज माय डिराइव्ड क्लास। तो बेसिकली ये पेरेंट है और ये मेरी चाइल्ड क्लास है। ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जांपल देखा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। एक सिंगल पेरेंट क्लास है और सिंगल चाइल्ड क्लास है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जिसको हम देखेंगे वो होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि एक बेस क्लास हो गई, बेस क्लास से प्रॉपर्टीज किसी डिराइव्ड क्लास मिली एंड उसके बाद इस क्लास से भी प्रॉपर्टीज एक दूसरी क्लास मिली जो एक और डिराइव्ड क्लास बन गई। ये भी क्या है, ये इसका पेरेंट बन गया एंड ये इसकी चाइल्ड क्लास बन गई। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज यहाँ से यहाँ गई होंगी वो सारी प्रॉपर्टीज मतलब फर्स्ट ये जो फर्स्ट क्लास इसकी प्रॉपर्टीज, सेकंड क्लास इसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज हमारी इस थर्ड डिराइव्ड क्लास के अंदर जा रही होंगी। तो इसमें एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारी कार की कुछ बेसिक मेथड है जो हर कार के अंदर होती है। यहाँ से कलर को रिमूव कर देते हैं एंड उसके बाद एक टोयोटा कार नाम से हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है। इसके अंदर नेम को हटा के हम सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रांड को ऐड करेंगे। तो नेम की जगह अब हमारे पास सिंपली यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा। और अब इंडिविजुअल ब्रांड की कार, जैसे टोयोटा के अंदर देयर इज अ कार कॉल्ड फॉर्च्यूनर, देयर इज अ कार कॉल्ड ट्रेस, इनकी हम अलग से ही फैक्ट्री सेट करना चाहते हैं। तो इनको क्रिएट करके हम एक और अलग से क्लास बनाएंगे। लेट्स सपोज वी कॉल दिस क्लास फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर को मैन्युफैक्चर करती है और अभी इसके अंदर हमने इनहेरिट नहीं किया चीजों को। और बेसिकली इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे हमारी माइलेज कितनी होनी चाहिए या सेल्फ एक टाइप रख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप गोइंग टू बी, इज द फॉर्च्यूनर गोइंग टू बी डीजल, इज गोइंग टू बी और इज गोइंग टू बी पेट्रोल, या इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक कार भी हो सकती है। तो यहाँ पे सेट डॉट टाइप के अंदर हम टाइप को स्टोर करा देंगे। अब फॉर्च्यूनर क्या करेगा, फॉर्च्यूनर सिंपली टोयोटा कार की जितनी सारी चीजें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इनहेरिट करना है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो पहले हमारे पास कार क्लास Go on. Okay, here we are. So yeah, this is for the today's video. I mean, this for the today's stream. I hope you guys like this stream. So like, comment, subscribe, all this. Bye bye.